Hello students, welcome to Vipin Sharma Physics channel. Dear students of 10th class, we are doing ray optics, means we are talking about the angle of incidence, angle of reflection, incident ray, reflected ray. You know, in the previous lectures I have told you about the various concept of plane mirror, like if we stand before a plane mirror, say a distance of 5 meter, our image is also formed 5 meters behind the plane mirror. Now the question arises, what are the characteristics of the image formed by a plane mirror? Okay, see, when we talk about the characteristics of image formed by a plane mirror. Well, dear students, this is a question to be understood. See, I'm teaching you the basic level. Don't expect from this lecture a very high concept. Just 10th level, CBSE, state board syllabus oriented. You know, the first characteristic is what? So, dear students, in the plane mirror, the image formed is virtual and erect. Image formed is virtual and erect. अब ये एक बहुत बेहतरीन पॉइंट है. I'll tell you students, we just learn virtual and erect, but we must understand the meaning of virtual. Erect even then somehow means we can understand how be erect means सीधा, okay, but वो भी I'll explain you what we mean about virtual. When we talk about virtual, it means that the image cannot be obtained on screen. Image cannot be obtained on screen. तो इमेज को हम स्क्रीन के ऊपर नहीं ऑब्टेन कर सकते. करेक्ट. अब ये क्वेश्चन जनरेट होता है कि इमेज को स्क्रीन पे अगर हम ऑब्टेन कर ले तो क्या होगा? वो रियल होगा. अब आप पूछेंगे सर ये स्क्रीन का मतलब क्या है? जैसे आप सिनेमा में जाते हो तो वो जो इमेज बनती है वो स्क्रीन के ऊपर आ जाती है, रियल इमेज आ जाती है, ठीक है. बट व्हेन वी सी आवरसेल्फ इन अ प्लेन मिरर, तो वो जो इमेज बनती है और वो जो इमेज जनरेट होती है, दैट इज वर्चुअल, व्हिच कैनॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द प्लेन स्क्रीन और समवेयर एल्स, बट वो प्लेन मिरर में ही बन रही है. अब इसमें
एक लॉजिक है, क्या हम वर्चुअल इमेज को भी स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं? कैन वी ऑब्टेन वर्चुअल इमेज ऑन स्क्रीन? Can we obtain virtual image on screen? अब मेरा आंसर इसमें क्या रहेगा? यस। अगर if I change instead of can we, is virtual image be obtained on screen? मेरा आंसर रहेगा नो। Can, yes, is, no. Dear 10th class students, आप पूछेंगे सर what is the logic of can and is? We can obtain the virtual image on screen. How? Like you see yourself in a plane mirror, take a camera, photograph it. तो जो फोटोग्राफ है वो स्क्रीन का काम कर रही है, फोटोग्राफिक प्लेट। अब आप ये डिजिटल की बात ना करना, जो प्रिंट निकलता फोटोग्राफ का, तो वो हमने ग्लास में हम देख रहे हैं, वी आर लुकिंग इनटू द मिरर एंड with the help of the camera we click the pic and then we get its print out. So this is how the virtual image can be obtained on screen. Now the question is virtual image be obtained on screen? No. The image formed in the plane mirror cannot be obtained on screen. That's it. Hope it is clear. That's why the concept virtual image is there. Well, students, अगला पॉइंट आपको बताते हैं इरेक्ट इमेज. What's the meaning of erect image? Let me do it to one side. Erect image means the image will always be straight on the principal axis. I'll explain you the meaning of principal axis. Okay. The size of the image is, you know, what kind of size of image we will get is same as the size of the object. Size of image is always equal to size of object. Yes. जब आप मिरर के आगे खड़े होते हो तो जो आपका साइज है उसी ही साइज का इमेज आपको दिखता है. That's why you people can dress up yourself before a plane mirror. You can comb your hair, बालों की कंघी कर सकते हो, मेकअप करते हैं जो लोग वो कर सकते हैं.
So size of image and size of object ये हमेशा इक्वल रहता है. I have proved already the distance of the image is equal to distance of object. जो अगर if you're standing 5 meters behind, your image will be formed 5 meters behind. अगला point, there is a literal inversion. Literal inversion. What is the meaning of literal inversion? Dear students, have you seen ambulance? On the bonnet of the ambulance, you will find that the alphabets are written like Russian, means inverted होते हैं. Or when we look into the looking mirror of the car, okay, we read ambulance accurately. And if it is written accurately, so there will be literal inversion. For example, the B will appear like this. A will not change, M will not change, U will not change, L will change, B will change, C will change, E will change. There will be literal inversion, left-right inversion. Okay. अब ये तो आपको मैंने 10th तक कुछ समझाया. अब मैं कुछ डिफरेंट सी कुछ बात बताने जा रहा हूं. जो लिटरल इन्वर्जन है ये 2 डायमेंशनल के लिए एप्लीकेबल है. you are all saying विपिन सर आप कुछ ना कुछ बीच में कुछ ना कुछ एडिशन करते रहते हो. बिल्कुल. Actually there is a front back reversal also. Left right तो है ही, front back reversal also. For example, अगर मैं ये चौक लेके यहां कैमरा में लेके आ रहा हूं कैमरा की तरफ, तो आप देख रहे हो कि चौक का ये वाला टिप है जो ये सबसे पीछे है और ये वाला सबसे आगे है. तो जो फ्रंट है वो बैक हो गया और जो बैक है वो फ्रंट हो गया. Of course, 2-dimensional letters will be left-right inversion. Make sense? So students, ये थे कुछ characteristics of image.
तो अभी मैंने रियल के ऊपर ज़्यादा कभी डिस्कस नहीं किया है। एक मैं सभी स्टूडेंट्स को एडवाइस करूंगा, पेशेंस के साथ पढ़ो। जितना पेशेंस के साथ पढ़ोगे उतना आपको ज़्यादा समझ आएगा। फास्ट फॉरवर्ड कर करके आप बहुत जल्दी अचीव करना चाहते हो, तो सक्सेसफुल और फेल्योर में यही डिफरेंस होगा। करेक्ट? सो दैट्स ऑल अबाउट द characteristics of image. Vipin Sharma Physics channel, how to use, just go to the playlist and select video. In the sequence you will find video notes with you. So thank you. God bless you, almighty nature bless you. Work very hard and you will always click, students, if you work hard with patience and honesty. Struggle comes, but that makes you more stronger. Without struggle you cannot achieve. If you achieve, that will not sustain. Thank you.